Hello everyone, welcome back. Uh, Today we are going to learn another very interesting topic of the unit genetics. So this is again under the NCRT chapter 5 Principles of Inheritance and Variation. I hope I'm clearly visible and audible. So this chapter has many important topics which are basically the foundation for genetics. Only if these topics are clear, we can move and clearly understand the next chapter, that is the molecular basis of inheritance, where we learn about DNA, RNA, etc. So basically in this chapter, we are dealing with some of the historical experiments that were carried out, as we saw in detail about the Mendel. Then we saw the chromosomal theory. Now we are going to see that how a sex of an individual or an organism can be determined, or how is the determined, what are the factors that are associated with either forming after fertilization, how a female or a male, how is it decided, and who basically contributes to this formation. After that, we are going to be looking up into two interesting topics, that is linkage and recombination. So these are again very much important for an organism to reproduce sexually, or these are the basic characters that will cause and lead to variations in organisms. All right. So this we are going to discuss in the unit 6 for the biology and the NCRT chapter 5. So let me start by my introduction. I am Janani Saptharishi and I am currently pursuing my biotechnology, BTech biotechnology, and I am associated with India's largest platform, Unacademy. So, what all will you get in Unacademy? Let me take you through it. So, you will get daily live classes, okay? You will have live classes scheduled every day, and we will engage you in group discussions, we'll engage you in doubt clearing sessions. It is very interactive. All right, we'll have many activities like answer the polls, and we will also give you all live tests and quizzes in where you can evaluate your performance. You have a number of mock tests for every chapter, half syllabus, full syllabus, as you wish. All right. And then we have structured courses, and also it provides you complete syllabus coverage. By that I mean that if you're preparing for an examination, for example for NEET, if you're enrolled using my referral code, doesn't mean that you will get access only to biology. It means that you will get access to all the subjects that are required to crack your desired examination. You can prepare with Unacademy for any entrance exam that is conducted across India, and we assure you the complete syllabus coverage. So, for NEET example, you will have physics, chemistry, biology, and all the things from A to Z will be covered under the same. And you will get unlimited access to all the content regarding your course. So, one subscription will get you access to all the live lectures, the recorded lectures, the mock test, quizzes, test papers, and everything. And you can watch it at your comfort and your ease. In such a situation, we all are at home, and this is what we really need to do, and you can make the most out of it. So, you will have live classes and you will be preparing with the top educators on board. And we have a very comprehensive syllabus. The syllabus that is offered is very comprehensive and very much you know uh, just it is made that how it is required for the examination. And all you have to do is go to the Unacademy learning application, install it, and get its subscription. And once you get the subscription, you can directly communicate to us through the Telegram application. All you have to do is download it and just type the following URL and click on join. So all this information is provided in the description box below. Now, as soon as you will subscribe, these are the fee options along with the durations available.
So I recommend you the most the 12-month course because it is very economical. So for the entire 12 months, all you need to do is pay 15,000. So 12 months in 15,000. That is very much economical. And also to prepare for an examination like NEET, you will at least need 12 months in hand. And if you're in class 11, class 11, 12 months is the most recommended and it will be apt one for you. If you're in your class 12, you can go along with a 6-month one. And I have another small gift for you from my side. That is, if you will use my referral code, that is my name, Janani. If you'll type this code, you will avail an extra 10% off in all the fee structures. And then the 12 months one is now only 13,500. So join with us. Please do like, share, and comment your views on the video. It will definitely be helpful for you. And let's crack it. So, starting with the first topic for the video, that is sex determination. So, in this lecture, we will be going through with sex determination in detail. So, basically, uh, sex determination is like a process that will categorize, all right. So we all know that all the organisms are into two, that is the male and the female. So it is this process that will categorize it into two sexes, that is male and female, all right. And what happens in humans? All right, the process that determines the development of the sexual characteristics of the organism. That is that what will specify the morphology of an organism. So the cytological observation made in a number of insects. All right, so you need to remember that ये जो सारे ऑब्जर्वेशंस और डिस्कवरी जो सेक्स डिटर्मिनेशन के रिलेटेड स्टार्ट हुए थे, ये सब स्टार्ट हुआ था एक इंसेक्ट्स पे वर्क करके। ह्यूमंस या किसी और एनिमल्स पे वर्क नहीं किया था। आप याद रखिए कि सब साइटोलॉजिकल यानी कि साइटोप्लाज्म रिलेटेड एंड सेल रिलेटेड जो भी ऑब्जर्वेशंस थे ये इंसेक्ट से लीड हुए थे टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ genetic or chromosomal basis of sex determination. All right. And factors that were proved that were said that they affect the sex of the individual. So the factors that affect the way affecting the variations in the sexual morphology are the environmental variables and the temperature. So किसी भी organism का जो environment है वो definitely उसको affect करता है. फिर आता है डिफरेंट क्रोमोसोम्स. सो एक ऑर्गेनिज्म में लाइक फॉर ह्यूमंस वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. तो इसमें क्या होता है कि इनमें से कोई एक क्रोमोसोम हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा. देन वी हैव सोशल वेरिएबल्स अगेन, some social elements that we can see. Different alleles are what contrasting traits. सो हर क्रोमोसोम के एलील भी हमें सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी में अफेक्ट कर सकते हैं. एंड फिर जीन्स जीन्स कहाँ आते हैं? क्रोमोसोम्स में. एंड ये तो देन डेफिनेटली दे विल affect, right? Just a moment. If you have any doubt, you all can put it up in the chat box. Hi Bharat. Hi, let's fly. Hi brothers and hi. Thank you brothers and sisters. So now coming to the sex chromosomes. So what happens is in most of the animals, a pair of chromosome is responsible for the determination of sex. यहाँ पे कहा pair of chromosomes, यानी कि एक किसी भी एनिमल में दो क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन करने में, यानी कि वो मेल होगा या फीमेल.
तो ये जो क्रोमोसोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन से लिंक्ड है उन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. ऑलराइट. And in a scientific term, they are called as allosomes. All right, fine. So, the chromosomes other than the sex chromosome are called as autosomes. So, जो chromosome 1 to 22 होता है वो होता है autosomes. And जो humans की बात कर रही हूँ, ठीक है, in case of humans. And जो 23 वाला जो pair है हमारा, जो last set of chromosome है वो है allosome. ठीक है. तो जो फीमेल होती है ह्यूमंस में वो होती है एक्स एक्स, एंड मेल जो होता है वो होता है एक्स वाई. ऑलराइट. सो द फीमेल, बेसिकली द एग इज एक्स एंड एक्स, एंड जो स्पर्म है उसमें से एक एक्स होता है और एक वाई होता है. So if there is a combination between X and the X, it forms a girl, that is a female offspring. And if a combination takes place between the X and the Y, it will give rise to a male offspring. Hi Tejas Sharma. So, observe that sex chromosomes were distinct from each other. Studied by, इसको किसने स्टडीड किया? इसे स्टडी किया है इस प्रोसेस को हेंकिंग ने. ठीक है. तो ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं. ठीक है. डिस्टिंक्ट यानी कि एक दूसरे से अलग होते हैं. And they traced out a specific nuclear structure all through the spermatogenesis in wasps. ठीक है. कहाँ कौन से ऑर्गेनिज्म से डिस्कवर हुआ था? ये हुआ था वास्प से. और क्या किया था कि एक जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है ना, थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इसे ट्रेस आउट किया था, से ढूंढा गया था. Hi Tejas Sharma. And now, see, they named the structure as X body. तो ये जो स्ट्रक्चर पाया गया था इसे नेम किया था एक्स बॉडी में. ठीक है. तो ये होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्योंकि एक जो क्रोमोसोम होता है वो एक हमारे, हम कह सकते हैं कि वो एक्स शेप में होता है, इस तरह. नाउ observe that 50% of the spermatozoa received this structure after spermatogenesis. ठीक है. देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं ये. And whereas the other 50% did not receive it. तो हमने क्या देखा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, एंड oogenesis में पहले बनता है प्राइमरी oocyte. फिर आता है meiotic division 1, and what is formed is it undergoes a meiosis and they form secondary spermatocytes. Here also they will form the secondary oocyte. So one large is formed and the ova is formed and a first polar body is formed. All right. फिर आता है meiotic division 2, यानी कि वापस से meiosis होता है दोनों में. ठीक है. तो यहाँ पे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये और आगे मल्टीप्लाई करता है, 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. इधर भी जो सेकेंडरी oocyte है वो यहाँ क्या बनाता है? एक बड़ा ओवा बनाता है, एंड इट विल मेक अनदर पोलर बॉडी. So it will again go into differentiation and it will give rise to spermatozoa that are similar and haploid in nature. And the oogenesis will give rise to an ova. So this was the process. Now, later investigated by the scientists, they concluded that the X body of the hen king, alright, as I told you, the X body इन्होंने जो देखा था वो एक्चुअली एक क्रोमोसोम ही था, क्योंकि वो X शेप में होता है. Why was it given the name? तो अब आते हैं दो साइंटिस्ट, स्टीफेंस एंड विल्सन. They revealed that the chromosomal basis of sex dependent is on the presence or the absence of Y chromosome. तो ये तो आप सब जानते हैं कि जो मेल है ना, सेकेंड, तो जो मेल है उनमें होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि जो 23rd पेयर है जो क्रोमोसोम के, वो एक होता है एक्स एंड एक होता है वाई. एंड जो फीमेल है उसमें दोनों ही एक्स होते हैं. So basically, Stephen and Wilson, they determined that
Now, they said that in the male, this Y chromosome is its presence or absence will determine the sex of an individual. How? Let us consider the example of a human and we'll just make a Punnett square. So this part is my male and this is my female. All right. So let me just make a Punnett square. If this is my, so fine. So if here I will have the female one, that is the X and X. So female has two similar sex chromosome X and X. The male will have one X and one Y. ठीक है? तो अब क्या हुआ कि जब इसका पनेट स्क्वायर बनेगा तो जब x एंड x बन रहा है x एंड y बन सकता है कि वापस से ये दोनों कंबाइन होके वापस से x एंड x बन सकते हैं ठीक है एंड x एंड y बन सकता है तो जब भी x एंड y बनता है ये हो जाता है मेल एंड जब भी x एंड x बनता है ये होती है फीमेल तो इस पनेट स्क्वायर में आप मुझे बताइए कि किस वजह से मेल या फीमेल फॉर्म हो रहा है ये क्या ये एक्स की वजह से नहीं देखिए यहाँ पे क्या अगर वाई प्रेजेंट है तो वो मेल है अगर वाई एब्सेंट है तो वो फीमेल है ठीक है so see here there is a presence of y so when y is present it turns out to be a male and if y is absent it turns out to be a female so basically it is the y chromosome all right that is determining the sex of an organism and y chromosome is present only in male so this I just gave you an example in case of a human, all right, where we will study many different organisms, insects, in how the sex is determined. So Stephens and Wilson's what they said that the chromosomal basis is actually the sex dependent on the presence or the absence of the Y chromosome. Fine. So they identified the Y chromosome and then known as the sex determining chromosome. All right. So Y chromosome is the sex determining chromosome. So basically females are termed as होमोगैमेट वाई बिकॉज जो दो गैमेट है वो दोनों ही एक्स है यानी कि दोनों एक दूसरे से सेम है हेंस द टर्म होमोगैमेटिक इज गिवन all right, so the eggs that are produced by the female, they both have the X and X. So in an individual, if the two sex chromosomes are similar, the gametes produced are similar, hence homogamitic. Now coming to heterogamitic. Heterogamitic कहाँ देखने मिलेगा? Male में, ठीक है? And heterogamitic क्या होगा? एक gamete होगा X या फिर एक sex chromosome X and एक Y. So the sperm will produce two sex chromosomes that are different. All right. So one single individual has two sex chromosomes that are different, X and Y. And in some cases of insects, they have X and O. That means only one sex chromosome, that is the X. All right. So O represents nothing here. So in some cases, what happens in males, only one X is present and one there is nothing or O. All right, not. Fine. Gametes produced are dissimilar. That is why it is heterogamete. So the primary sexual characters are produced by the gametes of the reproductive. तो ये जो gametes है वही हमारे primary sexual characters यानी कि हमारे morphological character जिससे हम male and female के बीच में distinguish कर सकते हैं उसके लिए responsible होते हैं. Now, coming, how can the sex determination can be explained? So they can be explained by chromosomal theory of sex determination, genetic balance theory of sex determination,
and the haplodiploidy method. So first let us see the karyotype of a human. एक karyotype of a human क्या होता है? ये होता है एक representation ह्यूमन में जितने भी क्रोमोसोम्स है पैर में, उन सभी का ये बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. तो अगर समझिए कि ये एक इंसान एक्स वाई जेड जिनका भी ये कैरियोटाइप है, उनके शरीर के जितने भी क्रोमोसोम्स है यहाँ पे हम देख सकते हैं. ठीक है. तो एंड इसके जो 1 to 22 जितने भी रेड में लिखे हुए हैं ना, यानी कि 1 to 22, इसे हम कहते हैं ऑटोजोम्स. ऑटोजोम्स क्या होता है? अ क्रोमोसोम दैट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो जितने भी आप रेड में जितने भी आप देख रहे हैं ना, यानी कि 1 से लेके 22, इनका एक ह्यूमन के सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ, यानी कि वो मेल है कि फीमेल है, उनके कैरेक्टर्स के साथ इनका कोई लेना देना नहीं. सिर्फ ये जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है ना, या फिर जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, लेट मी टर्म इट लाइक दैट एज द 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, only they are responsible for the sex of an organism, and they are called as the sex chromosome. So can you all tell me what the this karyotype is of? This is a karyotype of a human male. Why? Because I see one X and one Y. I see a heterogamatic condition. Alright, I hope this is clear. Now, just a simple question. Sex determination is done by autosomes, allosomes, hormones, or pheromones. So the right answer is allosomes. Allosomes are basically the 23rd pair of the chromosome. Alright, now coming to the heterogamatic sex determination. Alright, so a condition where the chromosomes are not similar, and it is usually done by allosomes. So what happens here is it is the determination of sex by allosomes. Determination of sex by allosomes is called genetic sex distribution. तो जब भी हमारे जो लास्ट पेयर या फिर जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उससे जब भी हमारा सेक्स डिटरमाइन होता है, उससे कहते हैं हम जेनेटिक सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये टर्म आप याद रखिए. Hi Ayushi, how are you? Thank you so much. और द क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, तो अब हम देखते हैं होमोगैमेटिक सेक्स और द पेरेंट. इन दिस ओनली वन ऑफ द सेक्स विल प्रोड्यूस सिमिलर गैमेट्स. अब क्या होता है हेट्रोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन? क्या होता है, दो पेरेंट है, उनमें से एक होता है होमोगैमेट. होमोगैमेट यानी कि सिमिलर गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एंड जो दूसरा गैमेट है वो है हेट्रोगैमेट. ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है टू डिसिमिलर टाइप ऑफ gametes. So the other produces dissimilar and one of them will produce similar. ठीक है. So when is the sex of the species determined? So the sex of the young one is determined at the time of syngamy. Syngamy हमने पढ़ा था. Syngamy कब होता है? Fertilization के वक्त. When the egg and the female egg and the ova and the sperm, they fuse together. That is known as the fertilization, and this fertilization leads to syngamy. Alright, अब पढ़ते हैं कि क्या आता है इसमें, कि it depends on the type of the gamete of the two dissimilar gametes. So what happens is that will unite with one another of the homogametic parent. See, we'll see what they mean. It depends on the type of the gamete of the two dissimilar gametes. देखो, अगर डिसिमिलर वाले गैमेट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे कि हमने वाई वाले केस में देखा, अगर वाई के प्रेजेंस या एब्सेंस से डिटरमाइन होता है, तो डिपेंड किस पे करता है? डिसिमिलर, यानी कि हेट्रोगैमेटिक पेरेंट पे वो डिपेंड करता है. एंड इट यूनाइट्स विद द अदर गैमेट, मतलब ये कॉज करता है यूनिजन होमोगैमेटिक पेरेंट के साथ. So now let's come to how the male sex determination occurs.
Alright, so male basically has a heterogamatic condition, that is two different gametes are present. So the males are heterogamatic. So males जो है वो produce करते हैं dissimilar gametes and the female are homogamete. So ये दो type है हमारे पास. तो जो heterogamatic जो भी condition होता है हमारे पास दो type है. एक होता है XO type, ठीक है, and एक होता है XY type. इसमें बेसिकली ये जो है ये होते हैं फीमेल्स, ठीक है. जो एक्स एक्स है वो है हमारे फीमेल एंड एक्स नॉट या फिर एक्स वाई ये जो है वो है मेल, जिसमें एक एक्स है एंड यहाँ पे सिर्फ केवल इनके पास एक एक्स है. दे हैव ओनली वन एक्स chromosome. All right, and here they have two sex chromosomes, that is one X and one Y. All right, that is the basic difference between these two. Now ये जो हेट्रोगैमेटिक टाइप या फिर सॉरी जो एक्स एक्स नॉट टाइप ऑफ जो हेट्रोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन है इसे डिस्कवर किया था मैकलंग ने, ठीक है. तो इन्होंने क्या देखा था कि जो फीमेल्स है इनमें होता है एक होमोगैमेटिक यानी कि एक्स एक्स कंडीशन, होमोगैमेटिक. एंड जो एक्स नॉट है इसका मतलब होता है कि मेल्स में एक एक्स है एंड एक जो दो सेक्स क्रोमोसोम है दूसरे में इट इज not missing, it is not present. All right, so they have only one X and they don't have a Y, neither another X. So basically they have only one X. So this state is also termed as heterogamete. Fine. So where they are observed, X X नॉट टाइप कहाँ पे ऑब्जर्व होता है ये आप याद कर लीजिए. इसका एग्जाम्पल ये होता है ग्रास हॉपर. All right, so the male sex is determined by the unpaired X chromosome. So the examples are grasshoppers and bugs, cockroaches. So इसमें क्या होता है ना, जो मेल सेक्स होता है उनमें होता है अनपेयर यानी कि एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम एंड ये डिटरमाइन करता है उस इंसेक्ट का सेक्स. सो नाउ द कैरियोटाइप ऑफ द फीमेल, यहाँ पे जो ए है उसका मतलब है ऑटोजोम्स यानी कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स. तो जो फीमेल है उसके पास होगा एक्स एक्स टाइप के सेक्स क्रोमोसोम. तो ये है हमारे सेक्स क्रोमोसोम. तो एक्स एक्स टाइप के अगर सेक्स क्रोमोसोम हो तो फीमेल है एंड एक्स ओ टाइप के हो यानी कि केवल एक एक्स हो तो वो मेल है, ठीक है. एंड वेर एज स्पर्म्स में क्या होता है कि वन हाफ ऑफ द स्पर्म्स हैव ए एक्स एंड द अदर हाफ हैव ओनली ए. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक सेट ऑफ स्पर्म्स में ए एक्स होता है यानी कि एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स प्रेजेंट है एंड द अदर हाफ ऑफ द स्पर्म्स में केवल ऑटोजोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है. तो दिस इज बेसिकली नोन एज द कॉम्प्लीमेंट यानी कि दो डिफरेंट टाइप, ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम. And the ova contains one AX, that is the component of the chromosome of the ova is AX. ओवा एक ही होता है एंड उसमें ए एक्स होता है. तो अगर ये ओवा जाके फर्टिलाइज करता है ए एक्स वाले स्पर्म के साथ तो बनती है फीमेल. क्यों? क्योंकि उसमें एक्स एक्स कंडीशन आएगा. एंड अगर ये ओवा जाके फर्टिलाइज करता है ए के साथ तो बनता है एक्स नॉट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑटोजोम है बाकी कुछ नहीं है. तो ये बनता है मेल, ठीक है. तो the sex of the offspring depends on the type of sperm that fertilize the ovum. So basically now it is a chance event, यानी कि जो भी sperm जाके सबसे पहले इसे fertilize करेगा, ठीक है, इनमें से जो दोनों sperm है जो भी इसे सबसे पहले fertilize करेगा वो उसका सेक्स डिटरमाइन करेगा. तो अगर ए एक्स ने पहले फर्टिलाइज किया तो फीमेल, अगर ए ने पहले फर्टिलाइज किया तो होता है मेल. So during fertilization, the sex of the offspring depends on the type of sperm that fertilizes the ovum.
So what happens is that the sex of the offspring जो होता है वो होता है basically वो depend करता है type of sperm पे. So it is the male who is responsible for the sex determination. So this is the image of a sperm fertilizing the ova. The karyotype of the females will be as follows. So here, yes, what we are seeing is this. It is the same thing again. So one of the, yes, the other half are A. This is a representation. What is the sex determining factor? So sex determining factor, see, like in this case, it is the XO. तो ये जो मेल के पास, इस केस में, हाँ, हम दो केस पढ़ रहे हैं, तो जो हेट्रोगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन है इस टाइप में, तो हर एक टाइप या हर एक इंडिविजुअल, हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है. तो इस केस में ये एक्स नॉट जो है वो है हमारा सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर. क्यों? क्योंकि ये हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में है. तो अब आप देखिए जैसे हो रहा है, तो फीमेल बने एक्स एंड एक्स, ठीक है. तो फीमेल बनाएगी, ये दोनों ही जो गैमेट है वो है एक्स एंड एक्स, एंड जो मेल है उसके पास एक है एक्स एंड एक गैमेट में केवल ऑटोसोम्स है, एंड इट इज द बेसिकली एब्सेंस ऑफ द क्रोमोसोम एक्स. सो द मेल हैज एक्स एंड नॉट और एक्स एंड ओ. तो जब ये एक्स एंड एक्स कंबाइन होता है ना, अभी जो चांस इवेंट है, अगर ये स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है कि ये वाला, ठीक है, तो दोनों ही 50-50 या कोई भी कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होते हैं, बट दोनों प्रेजेंट होंगे. तो अगर इस स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया तो बनता है एक्स एक्स, ठीक है, एंड एक्स एंड ओ साथ में फर्टिलाइज हुए तो बनेंगे एक्स ओ, ठीक है. तो जो एक्स ओ है वो हो जाएंगे मेल एंड एक्स एक्स फीमेल. तो यहाँ क्या हो रहा है कि इस ओ के प्रेजेंस या एब्सेंस, प्रेजेंस यानी कि पॉजिटिव, या फिर इसके एब्सेंस से जो हो रहा है वो उससे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है. तो इस चीज को हम कहते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर. Yes, it is the sperm in this case, but there are some insects in which the female also determines the sex. We will see that in the next segment. So, the male heterogamete sex determination among the following is, it is the X and XO type. जो ये सारे जो मेथड है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एक्स एंड द एक्स ओ टाइप और द एक्स एक्स एंड द एक्स एक्स वाई टाइप. ये किन में आता है? ये होता है ग्रास हॉपर, कॉकरोचेस, बग्स में, एंड एक्स 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 वाई ये होता है ह्यूमंस में एंड ड्रोसोफिला. नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप, एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप. यहाँ पे क्या सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा? यहाँ पे वापस जो स्पर्म है वो सेक्स डिटरमाइन, यानी कि जो मेल गैमेट है वापस से वो जो है सेक्स डिटरमाइन करेगा, ठीक है. तो ये है हमारा सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर एंड द मेल हेट्रोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन. Females and the males produce same number of chromosomes. Thank you. So the females and the male produce same number of chromosome. यानी कि देखिए, फीमेल के पास भी 23 पेयर्स होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो एक्स एक्सआई टाइप है ये पाए जाते हैं ह्यूमंस में एंड ड्रोसोफिला में, ठीक है. तो ड्रोसोफिला में जो होते हैं वो होते हैं 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एंड ह्यूमंस में 23. तो ड्रोसोफिला में जो मेल एंड फीमेल है दोनों में ही 4 पेयर होंगे. ऐसा नहीं होगा कि मेल में हुआ 6 पेयर, फीमेल में 4 पेयर, नहीं, दोनों में 4 पेयर, एंड ह्यूमन में दोनों फीमेल एंड मेल में 23 पेयर ही होगा. बट जो 23 पेयर है वो डिफरेंट हो सकता है. सो इन ह्यूमन बीइंग्स एंड सम इंसेक्ट्स सच एज ड्रोसोफिला. ऑलराइट, so here I have one X chromosome and one Y chromosome in case of the male. Another important thing you need to remember, see, in case of the females, both the strands or both the set of the chromosome, you can see that they are equal in size. All right. In case of the male, the Y chromosome is shorter in length than the X chromosome.
तो Y जो होता है वो होता है short than the X chromosome. All right. So the male heterogametic, so the males have XY chromosome and this is the sex determining factor. So the male produce two types of sperms, alright, and the females are homogamitic, yani ki females have X and X chromosome. Similarly, ova having one X chromosome each. तो बेसिकली ये जो हमारा ओवा है ऐसे दो के, एक में एक X and दूसरे में दूसरा X, alright. So the sex of the offspring depends on the fertilizing of the sperm of the X or Y. तो अब ये जो sperm है ये X है कि Y है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा जो offspring का जो sex है वो, ठीक है, male and the female. So the female again we see इधर होमोगैमेट है एंड मेल से एक हो सकता है एक्स स्पर्म, एक हो सकता है वाई स्पर्म. तो अगर एक्स एंड एक्स ने साथ में फर्टिलाइज कर लिया तो बनती है फीमेल. 50-50 चांसेस है इसमें दोनों के. एंड एक्स एंड वाई ने किया तो बनते हैं मेल. ठीक है. So the male heterogamatic sex determination among the following is XXXO, XXXY methods. So again the answer is XXXO methods जो हमने पहले पढ़ा था, जहाँ कहाँ देखा जाता है, ग्रास हॉपर्स, बग्स एंड कॉकरोच. XXY मेथड कहाँ देखा जाता है, ड्रोसोफिला. Yes, in botany and zoology, genetics has the same concept. Yes, you are right. Now, the female heterogamity sets, as asked the question that what is the sex determining factor? In all these cases, it was the males. So, in some organism, it is also the females. Let us see how. So, the female is now heterogamity or it has a heterogamatic condition. यानी कि अभी जो फीमेल्स हैं उनके पास दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स हैं. फीमेल्स प्रोड्यूस द डिसिमिलर गैमेट्स. ठीक है. तो ये होते हैं, इनको हम जनरली Z से रिप्रेजेंट करते हैं. जो भी मेल वाले हैं वो आप याद रखिए, एक हिंट की तरह लीजिए कि जो मेल वाले हैं उसे हम X या Y के टर्म्स या O से रिप्रेजेंट करते हैं. O का बेसिकली होता है एब्सेंस. ठीक है. तो वो तो यहाँ पे भी यूज होता है, बट जो फीमेल्स है उसमें जनरली Z का यूज होता है. तो एक होता है Z0 एंड ZZ टाइप and one is the ZW and ZZ type. तो ये जो Z0 and ZZ type है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं X0 and XX टाइप से. ठीक है. सिर्फ मेल के जगह भी फीमेल डिटरमाइनिंग सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाएंगी, फीमेल गैमेट. ऑलराइट. एंड इसको हम रिलेट करेंगे XXXY से. ठीक है. अब आई होप आप ये समझ गए हैं. Now we'll see. Now here the males are homogamitic. मेल के पास जो है वो सिमिलर गैमेट्स होंगे. एंड अब जो Z0ZZ टाइप है फीमेल गैमेट्स में, इधर क्या होगा कि ये जो फीमेल का जो ओवा है वो होगा, एक होगा. So females produce an ova with a Z chromosome and an ova without a sex chromosome. तो एक है Z and one is without the sex chromosome. And in the male is, as I said, it is homogamitic. So this phenomena is found in butterflies. ठीक है. तो ये देखा जाता है XOXX, ये देखा जाता है butterflies में. So here I have the male that has a homogamitic condition and a female जिसमें होता है XZ0. ठीक है. तो ये जो sperms है दोनों ही similar ऑटोजोम्स. A होता है ऑटोजोम्स प्लस द सेक्स क्रोमोसोम Z. एंड इधर ओवा में एक होगा A प्लस Z एंड एक होगा A प्लस O. तो जब भी ये कंबाइन होंगे ये बनेंगे, देखिए जब A प्लस Z अपने आप से A प्लस Z से कंबाइन होता है ये बनता है मेल बटरफ्लाई. एंड अगर A प्लस A Z और O वाली गैमेट कंबाइन हो तो ये बनता है फीमेल. ठीक है. I hope ये आपको समझ आ गया है. Now female produces two kinds of ova here. So one half has the Z chromosome and the other half has the ova has
no sex chromosome, they only have the autosomes. So this is what causes the sex determination. So male produce similar type of sperms. All the sperms are similar with the allosome Z. Hi Pramod Jaiswal, good afternoon. How are you? During fertilization, अब क्या होता है कि the sex of the offspring depends on the ovum that is fertilized. पहले determine होता था sperm that is causing the fertilization. अब depend होगा ovum पे that is fertilized. So the ZO and the ZZ types. Again the same thing, the same slide is repeated. So देखिए यहाँ पे बनता है मेल एंड एक्स जेड नॉट के साथ बन जाता है फीमेल. ठीक है. So the ZOZZ method of sex determination is seen in, it is seen in the butterfly. Butterfly को हम कहते हैं फ्यूमिया moth. ये होता है exact scientific name. Alright, this is an important question. Please do remember. The unpaired Z chromosome यानी कि Z नॉट क्या या फिर ZO, इसका unpaired मतलब होता है केवल एक Z का प्रेजेंस in the female determines the sex in butterflies, mans, fumia moth, reptiles. It is the fumia moth. The closest answer is the fumia moth. Now coming to the uh, ZW and the ZZ type. Female heterogamy. All right, this we can, what did I tell you, we can relate it to the in the case of the male, we can relate it to the XXXY type. The only difference, it is the female now that is causing the sex determination. So who decides the sex of the offsprings of the birds? It is the female. It is the female who will decide it. All right. So the gametes from the female. Why? Because the females are the heterogamatic. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटिक है और मेल जो है होमोगैमेटिक है. मेल के पास होता है ZZ and that is the ZZ and the female has a Z and W. So the system is called as DW dash ZZ sex determination. So the female heterogamete, female produce ova with the Z chromosome and the ova with the W chromosome. So as I said, दो ova produce होंगे, एक में होगा Z and एक में होगा W. And जो the sperms है वो same type के होंगे, Z and Z. So here, however the combination is occurring, it will determine the sex. The male homogamatic condition. Male produce sperm with the Z chromosome, that is the similar type of gametes. So this method is found in birds, reptiles and some fishes. All right. कहाँ पे फॉर्म होता है? Birds, reptiles and fishes. So female have two, we have seen this, and this male have all the Z. So during fertilization, the sex of the offspring, again in this case also, it is depend on the ovum that is fertilized. देखिए यहाँ पे दो मेल के सिमिलर गैमेट्स हुए Z एंड Z, फीमेल का एक Z एक W. तो जब हम इसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे ये इस तरह से आएगा. जो मेल है वो होंगे Z यानी कि Z एंड Z एंड जो फीमेल है वो होगा Z W. ठीक है. So female heterogamatic sex determination among the following is. तो आप देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो नहीं होगा क्योंकि ये जो होता है वो मेल का होता है. ठीक है. एंड मैंने आपको एक हिंट दिया था कि फीमेल में जेड वाले टर्म यूज होते हैं, इसमें दोनों ही हो रहे हैं. बट स्टिल लेट्स सी, दिस इज द मेल हेट्रोगैमेटिक कंडीशन, अगेन बोथ आर मेल. एंड इसमें ये जो होता है ये तो पूरा ही गलत है, ऐसे में तो कोई सेक्स डिटरमाइन हो ही नहीं सकता. ऑलराइट. Coming to another very important topic of linkage and recombination, right? So let us see which organism is called as the Cinderella of genetics. ठीक है, इसे हम Cinderella of genetics क्यों कहते हैं?
इस ऑर्गेनिज्म ने लाइक जेनेटिक्स की पूरी एरा को एक फेरी टेल की तरह चेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्यों? सो व्हाट हैपेंस दैट द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी वाज डन बाय, तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज किया था बोवेरी एंड सूटॉन ने, ठीक है, ये प्रपोज इन्होंने किया था, इन दोनों ने। बट इसको वेरीफाई यानी कि ये सही है, ये गलत है, इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसका प्रूफ जिन्होंने दिया था वो थे टी मॉर्गन। ठीक है, so it was Thomas Hunt Morgan who verified the chromosomal theory of inheritance. So it led to the discovery of the basis of variation through the sexual reproduction method. So what happened is Morgan worked with tiny fruit flies. Drosophila का जो common name है वो है fruit flies. That is Drosophila melanogaster, and found it that it is very suitable for scientific studies or the genetic studies. Why? We will see that now. So this is how a Drosophila looks, and this is Thomas Hunt Morgan. All right. So a fruit fly or a Drosophila melanogaster is again, one is the female and one is the male. So why did he choose the fruit fly? Because they could grow on a simple synthetic medium in the laboratory. तो ये जो होता है, इन्हें जो ग्रो करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है. It is as simple as you just grow a yeast on a synthetic medium. So basically, they could grow on a simple synthetic medium in the laboratory itself. The laboratory में ही grow किया जा सकता है, इसे कुछ external factors, conditions provide करने की जरूरत नहीं. And it will complete its life cycle in about 2 weeks. यानी कि सिर्फ 2 हफ्तों में अपनी न्यू जनरेशन स्टार्ट कर देगा. तो वी नीड नॉट वेट फॉर मोर टाइम. लाइक if the life cycle is like 1 year, or in humans like 9 months, you'll have to wait so much for the first result itself. And a single mating could produce a large number of progeny files. So जैसा कि हम कहते हैं, जितना ज़्यादा सैम्पलिंग साइज हो उतना ज़्यादा अच्छा है. तो जितने ज़्यादा प्रोजेनी हमें, जितने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छा है. There was a clear differentiation of sexes. Male and the female, they were, clearly differentiable. एकदम इसे अलग कर सकते हैं. Fruit flies show many types of hereditary variation. Very important. इन्होंने हमने देखने मिला वेरिएशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फ्लो हुआ. That could be seen in power with a low power microscope. So Morgan carried out several dihybrid crosses in the Drosophila, and these crosses were very much similar to that of the Mendelian piece. Like for example, Morgan ने जब भी येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल, सो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि फीमेल लिया जिनके पास बॉडी जो थी वो येलो कलर की थी एंड आईज वाइट कलर का था, एंड इन्हें क्रॉस किया ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स के साथ. And they intercrossed in their F1 progeny. But what happened that he observed that the two genes did not segregate independently. Mendel के law of segregation को contradict किया, and what happened that they did not segregate independently with each other, and the F2 ratio deviated a very, there was a deviation caused from this. What we studied is the dihybrid ratio 9:3:3:1. ये जो था expected था when the two genes are independent. In this case it was not. So what happened? Red-eyed and white-eyed, yellow-bodied and white-bodied को जब क्रॉस किया तो all offspring में इन्हें देखने मिला कि उनके पास red-eyed थे. ठीक है, F1 generation was red-eyed. Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome. तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना वो बहुत पहले किए थे, इवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेल्स और माइक्रोस्कोप. तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे. बट अब जब भी मॉर्गन एंड सुटन एंड बोवेरी में क्या था, वहां पे उनके पास हाई पावर माइक्रोस्कोप था,
उन्होंने सेल देख लिया था, क्रोमोसोम देख लिए थे, and they also already knew that the genes were located on the X chromosome. And they saw quickly that the two genes in the dihybrid cross were situated on the same chromosome. तो ये जो दो जीन है वो दोनों ही जो सिचुएटेड होते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में, वो एक ही यानी कि सेम क्रोमोसोम में सिचुएटेड थे. अब क्या देखने मिलता है कि ये जो प्रोपोर्शन है पेरेंटल जीन का was much higher than the नॉन पेरेंटल टाइप. पेरेंट जीन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा हाई था नॉन पेरेंटल टाइप से. सो मॉर्गन्स attributed this due to the physical association or the linkage of the two genes, and coined the term linkage to describe this physical association the of the genes on a chromosome. So the term recombination is basically to describe the generation of the non-parental gene combination. So Morgan and his group basically found that even that when the genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked with each other and showed a very low recombination, while the others were loosely linked. तो बेसिकली क्या आता है, देखिए, अगर ये टाइटली लिंक्ड है एक दूसरे के साथ यानी कि क्लोज इसमें प्रेजेंट है, तो ये शो करते हैं लो रिकॉम्बिनेशन. पास है मतलब रिकॉम्बिनेशन जो है वो लो है, ठीक है, लो रिकॉम्बिनेशन. एंड अगर लूजली लिंक्ड है यानी कि एक यहाँ है एंड एक जीन यहाँ है, तो हमें देखने मिलेगा कि जो रिकॉम्बिनेशन का जो रेट है वो ज्यादा है. So, and Alphonse Student was a student of Morgan, all right, who prepared the chromosomal maps on the based on the frequency of the recombination of the genes. Frequency मतलब basically repetition, कितने बार वो उन्होंने बार बार इस recombination को स्टडी किया, देखा कितने frequently या किस वे में recombination हो सकता है. So today the genetic maps are extensively used in the human genome sequencing project. यानी कि human genome, we will learn about this project in the end. All right. So see, this is our first cross. We can see the parental generation here. So one is the yellow-eyed and the white body, and this is the wild type. ठीक है, इसमें था red and the I think gray body. Yes. So what happens, the जो first जो parental generation है इसमें आया हमें 98.7%. ये जो है दोनों ही बहुत क्लोज इसमें प्रेजेंट है. तो रिकॉम्बिनेशन का जो ये है वो काफी लो है हमारा, दैट इज 1.3%. ठीक है. So let us see what does it represent. Yes. Just have a look at this. It is the yellow body, white-eyed, that is the mutant type, and the brown body, red-eyed, is the wild type. तो अभी जो हमें F1 जनरेशन मिला उसमें हमें मिला ब्राउन बॉडीड रेड आइड. ठीक है. एंड अभी हमने इसको क्रॉस किया इसके म्यूटेंट एलील से यानी कि रिसेसिव पेरेंट से. तब हमें क्या देखने मिला कि 49.35% जो थे वो ब्राउन बॉडी रेड आई थे, and यहाँ पे again we have brown bodied white eye, that is the recessive type, that is the 0.65%. brown bodied ये जो है वो recombinant type है, यानी कि इसमें इसका कैरेक्टर है थोड़ा सा, एक कैरेक्टर है जो इसका है एंड एक कैरेक्टर इसका है. So from here it is brown bodied, here it is white eye. Similarly, this has one of the characters that is yellow body and one of the character that is red eyed. So these two are the recombinant type, that is 1.3%, and they both are the similar to their parents. तो ये जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ सिमिलर है, hence they are known as the parental type. ठीक है. तो जो क्रॉस ए है, genes or the body color, eye color present on the same chromosome and they are closely linked. क्योंकि ये क्लोजली लिंक्ड है, इनका जो रिकॉम्बिनेशन परसेंट है वो बहुत लो था, इट वाज ओनली 1.3%. बट क्रॉस बी अगर आप में देखिए, आप इधर क्या था, जो वाइट आइट था इसको वापस हमने वाइल्ड टाइप के साथ ये किया, एंड यहाँ पे हमें
ये वाइल्ड टाइप मिला F1 जनरेशन में एंड इसे हमने अपने रिसेसिव टाइप के साथ क्रॉस किया, यानी कि वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग। ठीक है, अब हम साइज ऑफ द विंग एंड कलर ऑफ द आई को स्टडी करना है। ठीक है, पहले हमने देखा था कलर ऑफ द बॉडी एंड द कलर ऑफ द आई। इसमें क्या हो रहा है कि जो पेरेंटल टाइप है, यानी कि ये रेड आइड नॉर्मल वेंट, ये दोनों जो है वो पेरेंटल टाइप है। ठीक है, ये है 31.4% दोनों केसेस में। एंड ये जो है वो है हमारी रिकॉम्बिनेशन टाइप जो है 18.6%। एंड दिस हैज अ हाई 37.2% ऑफ recombination. So what happens is that it is seen that the genes of the eye color and the wing structure are also linked. That is, they are also present on the same chromosome, but they're relatively linked. That means ये जो present है वो काफी डिस्टेंस में प्रेजेंट है, तो इनका जो रिकॉम्बिनेशन का ये है वो काफी हाई है। ऑल राइट, so they're loosely linked, that is why recombination is more. Which organism is called the symbol of the genetics? It's the fruit fly, that is the Drosophila. Main reason for the selection of Drosophila melanogaster. I'm sure you can answer this question. What is meant by linkage? Physical association of genes on a chromosome, physical association of genes of two chromosomes, alleles on a chromosome, or physical association of alleles on two different chromosomes. It's a physical association of genes on the chromosome. Please don't see the word alleles and get confused. What is meant by recombination? The generation of a parental gene combination, that is a generation of a non-parental gene or new. So it is basically recombination जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को। प्लीज रिमेंबर दिस। Now, that is it for this lecture. In the next lecture, we will discuss what is mutation. Right? This is also mutation is also a very important topic. We will discuss it maybe in the coming video, and we will learn about the type of the diseases also that are linked with mutation. Uh, and we have types of mutations also, that is a single point mutation, we have frame shift mutations, and then we'll also be discussing about what are the mutagens, what causes the mutation, and why is the mutation is caused. And after that, we will also be studying about the Mendelian and the chromosomal disorders that are seen in the human body. तो जो भी डिसऑर्डर्स है, चाहे वो मेंडल से हो या क्रोमोसोम से की वजह से जो भी जेनेटिक कंडीशंस हमें देखने मिलते हैं, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड दैट मोस्टली विल बी द लास्ट टॉपिक, एंड इससे जो है हमारा पूरा जेनेटिक्स का जो फिफ्थ चैप्टर है एनसीईआरटी में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये पूरा चैप्टर हम कवर कर लेंगे अच्छे से। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू अरेंज फॉर एन MCQ सेशन. ऑलराइट, please join with me tonight at 8:45 p.m. I will be live at 8:45 p.m. Please do join, and please do like the video, subscribe the Unacademy channel, and hit the bell icon for more notification. You will definitely learn more things, and it will really be helpful for cracking your examinations. And please do like the video. It is like a motivation for me. Thank you so much for joining in today.